Dear esteemed, my colleagues, our media fraternity, actually since long actually I was waiting that we must meet actually. It is long time now. So we thought actually which is a better occasion than actually meeting on completion of 1 year of AIIMS functioning. So we thought actually we'll actually first make a small presentation so that you know actually what we are doing. Then after that, we'll have a question and answer sessions. As many questions you can ask me. I always feel comfortable talking to you all. And after that, actually, so maybe we'll divide 2 to 3 groups, which Nadia is taking care, and taking you to some of the facilities or the laboratories which are actually most modern, which are not there actually in some of the AIIMS in the country, including AIIMS Delhi also. So after that, actually, we'll meet and they will take you to the OPD, some select areas. Then after that, we are going to show you that the Bhishma cubes. So this is sort of a inbuilt hospital for any contingency. If there is any emergency, you can take that actually and you can establish a hospital for 200 patients. That actually our Dr. Ayush, who is in charge of the faculty emergency, he will take care about that actually. So welcome to AIIMS Jammu. So before actually coming to this actually, AIIMS Jammu or any institute in the country, All India Institute of Medical Sciences, as on today there are about 22 and they are also announced another 2. So it is going to be 24. So institutes are not just like any other hospital. They are not like any other medical college. They are the institute of national importance. They are the national referral hospitals, and they provide the tertiary care actually. So any institute actually, besides providing the basic general facilities, so our focus is always on super specialties actually. So how the concept of AIIMS came, I hope you have heard about Rajkumari Amrit Kaur, our first health minister post-independence. And she actually made this statement in the parliament. And this statement is very important actually. She said actually, it has been one of my cherished dreams that for postgraduate study and for the maintenance of high standards of medical education in our country, we should have an institute of this nature in India, which would enable our young men and women to have their post-graduation education in their own country. You know what used to happen after doing graduation, that is a MBBS, our doctors, they used to go abroad for post-graduation. They never used to come back actually. So keeping that in mind and the requirement of the country, so they said that actually you can go there, but ultimately you should come back and serve the country actually. So that was the main vision of the first president of AIIMS, that is Rajkumari Amrit. Undergraduate and postgraduate medical education in all its branches so as to demonstrate a high standard of medical education in its various aspects. Then to grant medical degrees, diplomas and other academic distinctions. Whatever the degrees are being awarded, degrees are recognized across the globe. So that is the objective of All India Institute of Medical Sciences. Now how this idea came about that we need not to go to Medical Council of India, it is also very interesting. You know that when AIIMS Delhi, the first AIIMS was being established, our health minister Rajkumari Amrit Kaur went to US, UK and other countries to motivate Indian doctors working over there to come back and help us in establishing All India Institute of Medical Sciences in Delhi. No, but those doctors who are there since long, they had foreign degrees actually, FRCS, MRCP and other things. But they were not recognized. So how this will work over here? Then actually they took a decision that whatever the degree will keep AIIMS away from the mandate of MCI, and what are the degrees they will establish, and what are the doctors who come from abroad to work with us, that actually need not to be actually recognized by the Medical Council of India. But of course, as on today, there are some doctors abroad, whether they are foreign doctors or Indian doctors who are working on this,
They are very keen to come over here and they keep on coming to AIIMS Delhi. But for that, they are involved in teaching, research, and skill development. And if they have to be involved in the patient care, like surgery and other things, then yes, we always take a permission from Medical Council of India to allow them to operate in our healthcare settings. No, important is that 10% of their time they must spend for community work. So their community work is also very important actually. Like our doctors, they go to community and work over there. And that is an important component, whether it's a doctor, whether it's a nurse, whether it's a students, they are posted in the for the community work actually. No, this is the vision of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. You know that actually this AIIMS-like concept was started in 2004 when Honorable Shri Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister and Srimati Sushma Swaraj was the Health Minister. So they actually thought why so many people come to AIIMS Delhi. And I was part of that actually study. We found that the patient is coming from different states like Bihar, West Bengal, Odisha, UP, Rajasthan, and our adjoining areas. And at that time, the number of patients, which is as on today also, there are about 14,000 to 16,000 patients a day. Then people, they have to come from far off areas actually. They have to spend a lot of money. Then actually, sometimes they have to sell their assets, some cattle, to generate, mobilize resources to come over here. Expenditure on treatment was very negligible, but the more expenditure was on staying outside the institute. Maybe for 1 week, 2 weeks, for cancer patients, 6 weeks actually. So they thought why not to actually provide similar type of facilities near to the doorsteps, right? So that was the whole idea. To begin, 6 AIIMS were established. Now, as on today, I said that there are 22 already working and 2 more has been announced actually. Then keeping that legacy forward, so this was our vision of Honorable Prime Minister. He said that AIIMS-like institutions, they aim to address regional healthcare imbalances, encourage evidence-based research, and elevate medical education standards in our country. They said that putting 6 only AIIMS in few states is not justifiable actually. Why not to establish more AIIMS-like institutions so that every state should have 1, and luckily our state has got 2. So that was the idea actually of the Prime Minister, that we must give at least minimum 1 AIIMS to each state actually. Now what is our vision in AIIMS Jammu? We are developing AIIMS Jammu as a global village of healthcare. What I mean to say about the global village is that AIIMS Jammu envisions a global village of patient-centric care, blending technology, skilled manpower, affordability, and Indian values to deliver world-class, accessible healthcare for every citizen. In addition to that, what a policy decision we have taken by the governing body, that we can invite the doctors of Indian origin who are working across the globe. Why not to invite them? They can start working with us, right? And they will be involved in teaching, in research, and skill development actually. So that decision is already been taken. And no, the doctors have started, I'm happy to share, that our Indian doctors, they have started coming to AIIMS Delhi. And as on today, so there are 74 doctors who are waiting to visit AIIMS Jammu, because we have given an appeal to all the doctors who are working abroad that AIIMS Jammu is an opportunity. You come over here, work with us in the research, in teaching, in skill development actually. So they have started coming, and every month we have few faculty and experts, not from the country, but across the globe actually. They are started coming actually. Now we'll actually, most of the Indian doctors who are coming, they are coming on their expenses. But we have kept a provision, if there is some faculty, we invite him in a particular subject, in a particular specialty, we can pay them air ticket, we'll give them a dignified stay in our guest house, and we'll pay them a token pocket money of 5,000 per day.
So that will take care about the routine things actually. And this scheme has already been approved, and it is also the government guidelines has also come actually. I think this is a big step for AIIMS Jammu and for other institutions also actually. So we want, you know, that our faculty is quite young actually. So then actually we want senior people, not from country, from other countries also. They should come and guide them actually, and have a mentorship program with us actually. And there are certain unique initiatives of AIIMS Jammu. Our focus is patient first. If this building is there, we have created a beautiful infrastructure, our architecture, our technology, our equipment which we have brought, keeping patient in mind. What are the requirements for the patient? If these buildings are there, I am there, my doctors are there, they are for the patient. So whatever activities we are doing keeping patient in our mind actually. Like patients, when patient come, their attendants, where to stay, we have a very good and beautiful night shelter for them actually, so that they can have a dignified actually stay over here actually. They can accommodate to 16 patient attendant, but we are working on another also. Then another is that we have made AIIMS Jammu as a pain-free AIIMS. And our Lieutenant Governor, Honorable Lieutenant Governor, when he visited on 31st of January, he has declared AIIMS Jammu as a pain-free AIIMS. What our idea is about pain-free AIIMS is that whenever a patient comes, the pain should be outside the hospital. When they come to the emergency, to the ward, or after operation, they should not feel pain. So our doctors, Department of Anesthesia, they take care, extra care that they should not feel pain, they should be comfortable actually. So that is the idea of free pain. AIIMS Jammu leads the way as the region's first pain-free hospital, ensuring healing without suffering. Now these are the different milestones actually which were there actually. We started actually, this cabinet approval was in 2019, then foundation stone by Honorable Prime Minister in 2019, Gazette notification December 2019, then Bhumi Pujan by Honorable Dr. Jitendra Singh, then inauguration by Honorable Prime Minister on 20th February. Inauguration was at that of infrastructure. At that time, this hospital was not functioning actually. And then commencement of hospital services were on 1st of August 2024 actually. Because when you want to start a hospital, you need that X-ray should be there, CT should be there, MRI, so the diagnostic services like lab services should be there, OT should be ready. If suppose some patient comes with a roadside accident, what I will say that I don't have OT, I don't have a CT or MRI. That's why we have taken about 5 to 6 months after inauguration, so that everything should be there before we open our hospital to the public actually. So that's why we had started on 1st of August 2024. Now this is the inauguration by Honorable Prime Minister. Actually they were very keen to inaugurate AIIMS Jammu along with the other 18-19 projects from AIIMS Jammu only. So 2 times the SPG team, they came over here actually, they did the survey. They asked us to make the arrangement for about 25,000 people. We informed that actually we can accommodate 1,000 in auditorium. Okay, we can arrange outside actually 5,000, not more than that, because roads were already ready actually. So twice they came actually, then ultimately they decided to inaugurate this and other IIT and IIM and other 18 projects from the Maulana Azad Stadium. So this was inaugurated from there actually. So this is, you can see that when they inaugurated. देश का एक एम्स जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता, लेकिन मैंने आपको यहाँ जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी, और ये गारंटी मैंने पूरी करके भाई CT MRI या कुछ लेटेस्ट लेना है, इट टेक 6 months to 1 year एक्चुअली। तो आपका टेंडर प्रोसेस, सिलेक्शन, फिर नेगोशिएशन, और ये मार्केट में रेडी अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे हम फाइनल हो जाता है, फिर हम वो भेजते हैं USA में, कंपनी जो वेंडर जो होता है भेजता है। इट टेक 6 months एक्चुअली इन मैन्युफैक्चरिंग एज पर आवर रिक्वायरमेंट एक्चुअली।
सो दिस इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस एक्चुअली। देन एक्चुअली हमारी इन पेशेंट जो 16 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, बेड्स आज 400 हैं और 15,000 पेशेंट से ऊपर हमने ट्रामा में ट्रीट किए हैं और अराउंड 4,000 इन पेशेंट में जो एडमिशन में की हैं। ये हमारी आईसीयू सर्विसेज हैं। आउट ऑफ 193 32 आईसीयू बेड्स आर फंक्शनल। सारी ये स्पेशलिटी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, देन अल्टीमेटली विल मेक फंक्शन 193 आईसीयू बेड्स। देन ओटी सर्विसेज जो हैं आज रिले भी कर सकते हैं, क्लास में कर सकते हैं, ऑडिटोरियम में कर सकते हैं फॉर टीचिंग पर्पज एक्चुअली वहाँ पर। सो ऑल थिंग्स हैव बीन टेकन केयर एक्चुअली। तो अभी हमारे 8 ऑपरेशन थिएटर हमने स्टार्ट किए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट जो है रेडियोथेरेपी इन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो इनाग्रेट किया है। डॉक्टर शबाब हैं यहाँ पर एक्चुअली। कहाँ हैं डॉक्टर शबाब? प्रोफेसर शबाब इज हियर, ही इज हेडिंग द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी पूरा कंप्लीटली फंक्शनल है। सो हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट लीनियर एक्सेलरेटर है जो हम रेडिएशन ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं, एंड वी डू ऑल काइंड ऑफ प्रिसीजन रेडिएशन ट्रीटमेंट। जो बेसिक को बॉल रेडिएशन ट्रीटमेंट पहले होता था, वी डोंट फॉलो दैट, वी डोंट हैव दैट ऑल्सो। सो स्टेट ऑफ आर्ट प्रिसीजन रेडिएशन ट्रीटमेंट, उसमें लाइक द लेटेस्ट टेक्निक्स इमेज मॉड्यूलेटेड रेडिएशन ट्रीटमेंट, इसको एमआरटी बोलते हैं हम, वी कॉल इट वीमैट ऑल्टो। देन वी डू स्टीरियोटेक्निक रेडियो सर्जरी ऑल्सो ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, ब्रेन मेटास्टेसिस के लिए। So we do deliver 7 weeks of treatment जो conventional radiation हम लोग करते हैं, उसको we try to deliver it in just 3 days or maybe just 5 days also। फिर हमारे पास state of art brachytherapy machine भी है जो internal radiation देती है, it is functional with us। And the best part is कि हमारे brachytherapy के लिए हमारे पास intraoperative procedures करने पड़ते हैं, और उन intraoperative procedures के लिए हमारे पास में dedicated operation theatre modular है, वो जो usually बाकी radiotherapy department में नहीं होता। So that कंसल्टेशन तो ऑलरेडी हमारे संजीवनी यहाँ चल रहा है एक्चुअली, वहाँ पर स्टार्ट हो गया है। हमारा ये है कि इस संजीवनी में 2 चीज़ें हम करेंगे एक्चुअली वहाँ पर। पहले हमने स्टार्ट किया था आज से कोई 2 साल पहले डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन, लेकिन वो ज़्यादा नहीं सक्सेसफुल था एक्चुअली। मे बी दे आर नॉट वांट टू कंसल्ट अस एक्चुअली, वी थॉट आवर फैकल्टी इज देयर, दे शुड एक्चुअली टॉक। अब हम जो कर रहे हैं, एक तो पेशेंट के लिए हमने ओपन कर दिया है, शेड्यूल बना दिया है कि एनी पेशेंट थ्रू दिस ई संजीवनी दे कैन टॉक टू अस, और हमारा रोस्टर भी बन गया है और उनको गाइड करने के लिए भाई क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे आना है या कुछ क्या इमीडिएटली करना है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना, जो हमारे पेशेंट ऑपरेशन करके सपोज करो पूंछ या कहीं दूर से आते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो फॉलोअप के लिए यहीं जरूरी आएँ, जिसको ज़रूरत है वही आएँ। हम उनको टेली फॉलोअप से उनको पेशेंट को देख के उनको गाइड कर देंगे कि आपको आने की ज़रूरत है या नहीं एक्टिव वहाँ पर। एक वो हम बिग वे में करना चाहते हैं एक्टिव वहाँ पर, अभी उसको लॉन्च किया स्टार्ट अभी वहाँ पर। बाकी यह है कि आर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ना, दिस इज़ वेरी आल्सो चैलेंज डिफरेंट टाइप ऑफ। हम फोकस जो सर्जरी कर रहे हैं एक्चुअली, वो जो चैलेंजिंग सर्जरीज वगैरह हैं एक्चुअली उसमें ज़्यादा कर रहे हैं एक्चुअली वहाँ पर। क्योंकि हमारा ना आर्थो वालों को क्या है कि अभी जैसे पहले हमारे पास 2 थिएटर स्टार्ट हुए थे, अभी हमने 6 और ऐड किए हैं एक्चुअली। अब उनको हफ्ते में जो दिन जो है ना, कभी 1 मिलता है या 2 दिन मिलते हैं हफ्ते में, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट हैं और सबको अभी हमने शेयर करते हैं। किसी का हफ्ते में 1 दिन नंबर आता है, किसी को 2 बार नंबर आता है एक्टिव वहाँ पर। अब जैसे बाकी जो है हमारे इक्विपमेंट अभी और आ जाएंगे, जब हमारे पूरे ऑपरेशन सेंटर फंक्शनल हो गए, देन वी विल बी एबल डाइल्यूट हो जाएगा जो पर्पस है हमारा। हम कहते हैं कि कोई पेशेंट जो बाहर जाता है यहाँ से, बट वो जो आप कह रहे हैं पेशेंट यहाँ से बीच में चले जाते हैं, बीच में सभी नहीं जाते हैं, बीच में कोई चला जाता होगा। कुछ लोग भी होते हैं कि उनको भाई जैसे मेडिकल कॉलेज जम्मू से कुछ लोग जो हैं क्या नाम है अमृतसर चले जाते हैं, कुछ चंडीगढ़ चले जाते हैं। दैट विल टेक देम, क्योंकि कोई भी पेशेंट आएंगे ना, पहले वी हैव टू एस्टैब्लिश ए कॉन्फिडेंस इन देम। पूरा एक्सप्लेन किया था उनको कि भाई इसका कुछ ज़्यादा हो नहीं पाएगा एक्चुअली, और यहाँ रहे। फिर क्या हो गया, पेशेंट जब 2-4 दिन रहता है तो पेशेंट के अटेंडेंट भी थोड़ा तंग पड़ जाते हैं एक्चुअली ना हॉस्पिटल में रहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप मशीनें जो है ना, वेंटिलेटर निकाल दो, कैथेटर निकाल दो, ऑक्सीजन निकाल दो। तो वो एथिकली हम कर नहीं सकते हैं एक्चुअली। हम कोशिश लास्ट तक करते हैं कि पेशेंट को जो भी करें, तो वो थोड़ा सा फिर डॉक्टर और उनके बीच में वो करे नहीं, हमें आप वेंटिलेटर उतार के दे दो, ये ऑक्सीजन निकाल के दे दो, हम लेके जाना चाहते हैं ये वो।
तो हमने उनको बहुत समझाया भाई ऐसा है कि आप ऐसी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, इट लीड्स टू एक्चुअली मर्डर एक्चुअली हम करते हैं एक्चुअली एथिकली इट इज़ नॉट एक्चुअली वहाँ पर। खैर अल्टीमेटली पेशेंट की वो डेथ हुई है, वो तो एक्सपेक्टेड था एक्चुअली वहाँ पर। फिर वो क्योंकि वो कहते हैं कि हमें जो है ये परमिशन नहीं दी उन्होंने एक्चुअली करने के लिए, तो थोड़ा सा रहा वो बीच में रहता है। हमारे डॉक्टर कहते हैं कि नहीं इसको मत लेके जाओ, कहते हैं हमने लेके जाना है, वो आईसीयू में भी घुस जाते हैं ये वो ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको एक कॉन्फिडेंस। देखो इंस्टीट्यूट को जो है ना, और इंस्टीट्यूट में दिल्ली में पेशेंट आते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। हम डॉक्टर साहब ये जो पेशेंट और अटेंडेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं थ्रू आउट इंडिया दे आर इंक्रीजिंग। तो अभी रिसेंटली आपने देखा कि जम्मू में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ व्हिच वाज इन द नेशनल न्यूज़। तो आपके यहाँ व्हाट आर द अरेंजमेंट्स, क्योंकि फ्यूचर में यू आर एक्सपेक्टिंग ह्यूज क्राउड, तो आपके यहाँ क्या क्राउड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली ना, ये नर्सिज़ हैं हमारी, जितनी भी नर्सिज़ यहाँ काम कर रही हैं उनको 6 मंथ ट्रेनिंग के लिए मैंने एम्स दिल्ली में भेजा था फॉर 6 मंथ, वर्किंग इन OT, ICU, वार्ड, ऑल स्पेशलिटी में। आई हैव स्पेंड 8 करोड़ रुपीज़ ऑन देयर ट्रेनिंग। दूसरा हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको भी भेजा था इन दिल्ली में, 2-2 हफ्ते सभी वहाँ लगा के आए कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको पिकअप करो और इम्प्लीमेंट करें। दूसरा सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन एक ट्रेनिंग होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हमने जो है दिल्ली से जो प्रोफेशनल लेवल के लोग हैं कम्युनिकेशन में उनको बुलाया, चाहे वो सिक्योरिटी वाला है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, नर्सिस हैं, डॉक्टर हैं, सबकी ट्रेनिंग कराई है लिए हमने भाई हाउ टू कंडक्ट, हाउ टू टॉक। और पेशेंट ICU में है तो राउंड के बाद पेशेंट को अटेंडेंट को ब्रीफ करना ज़रूरी होता है एक्चुअली वहाँ पर। और पेशेंट का अटेंडेंट वेट कर रहा है, उसको ये नहीं पता मेरे पेशेंट को क्या हो रहा है। तो हमारा ये सिस्टम हमने डेवलप किया है कि मॉर्निंग और इवनिंग में जब राउंड होता है पेशेंट के अटेंडेंट को ब्रीफ करना ज़रूरी है कि भाई उसकी कंडीशन क्या है, पहले से ठीक हुई है या थोड़ा सा कम हुई है वगैरह, तो वो ब्रीफ करते हैं। सिमिलरली अभी हमने पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ से हमने उनको टीम को पूरा बुलाया था यहाँ पर, और जितने भी हमारे जो हॉस्पिटल अटेंडेंट और सैनिटेशन वाले हैं उनकी भी ट्रेनिंग कराई है एक्चुअली वहाँ पर, वो कैसे कंडक्ट करना है। जो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं दे आर एक्स सर्विसमैन एक्चुअली, ओनली वी हैव अबाउट 327 एक्स सर्विसमैन। हमने इसलिए उन्हें लिखा कि दे आर वेल ऑर्गेनाइज, दे आर ट्रेंड आल्सो एक्चुअली, और उनका कंडक्ट भी अच्छा होता है। बट साइमल्टेनियसली हम ये प्रिकॉशन लेते रहते हैं। बट यह है कि आई विल रिक्वेस्ट ऑल द जो पेशेंट या उनके अटेंडेंट आते हैं थोड़ा सा वो पेशेंस रखें, कोई भी प्रॉब्लम है हमारे डॉक्टर कम्युनिकेट करते हैं। दैट्स वाई हमने ये जो है पेशेंट केयर मैनेजर, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर्स वगैरह रखे हुए हैं, ताकि एक जो कम्युनिकेशन गैप रहता है वो जो उसको फिलअप करने के लिए दिस पीपल आर द, बट दे आर वेरी लेस एक्टिव, वी इंक्रीज द नंबर आल्सो। बट रेगुलर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का जो है कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल पर वो होती रहती है रेगुलर रखते वहाँ पर, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, दैट वाज अ मिसिंग, बट वी हैव डन नॉट नो बिफोर स्टार्ट ऑफ द हॉस्पिटल एक्चुअली। लेकिन बंदे में बहुत कम हमारे लिए किया जाता। मैं एक सजेशन दूंगा, अगर कोई डेडिकेटेड आप यहाँ पे कोई विंडो रख सकें या कोई मीडिया मेडिकल कार्ड्स वगैरह कुछ बना सकें। ये देखो ना, ये नादिया कोऑर्डिनेट करती है, शी इज कोऑर्डिनेटिंग विद ऑल मीडिया पीपल। अगर इसमें आप कुछ कर सकें तो मुझे लगता है नहीं क्यों नहीं, एक्चुअली यू आर पार्ट ऑफ अस एक्चुअली, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है टॉक टू डॉक्टर नादिया। मीडिया की साइड से 20 से 25 पेशेंट्स डेली होते हैं, देखा जो हमारे पेशेंट के कोऑर्डिनेटर्स और मैनेजर्स मैनेज करते हैं। इसलिए वी आर टेकिंग ड्यू ऑफ आवर मीडिया फ्रेंड्स। सभी का कॉल आता तो है। इसको तो थोड़ा अगर ऑर्गेनाइज आप कर सकें। ये बेस्ट होता है कि ना, 1 person शुड कोऑर्डिनेट एक्चुअली ना, तो नादिया इज द बेस्ट पर्सन टू कोऑर्डिनेट एंड शी इज एक्सीलेंट कोऑर्डिनेटर आल्सो। सर एक मेरा क्वेश्चन है।